पिलाने आम इंग्लीश को बेसी इंपोर्टान्स देवा बर्तमान कहीं तुम जो ऑफलाइन एग्जाम हम तेणु ऑफलाइन एग्जाम रे तुम एमआईएल ओडिया एमआईएल ओडिया बहुत समय अच्छी तेणु इंग्लीश को इंपोर्टान्स देवा इंग्लीश टाक टे भल भाव प्रैक्टिस करवा देख पाई चार्ट रे तुम 5 ରୁ 5 रख पाई चार्ट रे तुम 5 मार्क रू 5 मार्क रख केमी मुझे कहीदेवी तुम पाई चार्ट देख क्वेश्चन टी देख ये क्वेश्चन टी समस्ते देख पाई चार्ट बिलो शोज हाउ मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मनी सैलरी अंडर डिफरेंट हेड्स केमिति से खर्च करती केमी से खर्च करते बुझीगल राइट पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड 70 वर्ड बोली गणिबा दरकार नहीं गणिबा दरकार नहीं 70 वर्ड तुम जानिच केतेटा लाइन हेल्ले 70 वर्ड हम तुम जो लंबा खाता देते बोर्ड रे तेणु तुम 7टी 8टी लाइन माने 10टी 8 ରୁ 10 लाइन हेल्ले तुम 70 वर्ड हो ओके तेणु 70 वर्ड्स रे इंटरप्रिटिंग द इनफॉरमेशन गिवन जो इनफॉरमेशन देछि ताको बुझे कि लेख बोली कहछि देख पिला माने एठी देख भल भाव में बुझ तेणु एठी से कौन कौन खर्च करती केमती खर्च करती 100% जो माने दरमा पाती 15% 15% से मेडिकल खर्च करती है देखीदेल तुम पढ़ीदेल टी माने ये जो पाई चार्ट को पढ़ीदेल ये पाई चार्ट को पढ़ीदेल 20% हाउस रेंट तांकर घर माने भड़ा नहीं दियंती 20% ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स रे खर्च करती 10% एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन पिला मानकर एजुकेशन रे 10% एस्टाब्लिशमेंट रे कौन कौन तैयारी कले कौन कले एस्टाब्लिशमेंट रे 15% सेविंग करती 15% और 10% कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट कन्वेंस माने कौन भी खर्च ट्रांसपोर्टेशन माने गाड़ी घोड़ा ये सब खर्च करती ठीक अच्छे एमती खर्च करती देखीदेल तापर तुम लिखि चलो प्रथमे कौन लिख कौन ना मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम टुवर्ड्स हाउस रेंट देख ता पूर्वर गोटे जिनस लिख कौन लिख मुझे कहीदेवी प्रथम सबुगुड़िक जिते भी पाई चार्ट अच्छी जिते भी तुम पाई चार्ट अच्छी कि जिते भी तुम टेबुल अच्छी कौन लिख द पाई चार्ट शोज ओके कौन लिख द पाई चार्ट शोज अबाउट ओके एमती लिख द टेबल शोज अबाउट कौन कि टेबल प्रेजेंट्स अबाउट ओके द पाई चार्ट शोज अबाउट लिख शोज अबाउट मिस्टर पाठक्स ओके और हाउ मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी अंडर डिफरेंट हेड्स ओके यही सेंटेंसटा तुम टिके यही गोटे सेंटेंस प्रथम सेंटेंस सेटा लिख ये प्रथम सेंटेंस देना तेणु मुझे कहीदे कौन लिख ना द पाई चार्ट बिलो लिखनी यहाँ बिलो लिखनी द पाई चार्ट कौन लिख द पाई चार्ट ये बिलोटा लिखनी द पाई चार्ट शोज हाउ मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी एंड डिफरेंट हेड्स ओके तुम लिख सार तापर तुम वर्णना कर मिस्टर पाठक स्पेंड्स मिस्टर पाठक से अनुसार लिख मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% ऑफ इनकम टुवर्ड्स हाउस रेंट देख हाउस रेंट आरंभ करता यहाँ देख मन देख यू आरंभ करदेला ना कि यू देख यू 20% तापर एमती जीव ओके आरंभ करदेला कौन ना मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम टुवर्ड्स हाउस रेंट हिज बजेट ऑन तापर कौन हाउस रेंट लिखिदेला दैट पाठक स्पेंड्स माने खर्च करती मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम टुवर्ड्स हाउस रेंट ओके हिज बजेट ऑन ग्रोसरी हिज बजेट तुम्हें ना एमती डायरेक्ट भी लिखिपर मिस्टर पाठक स्पेंड्स ओके आउ पुणी लिख ग्रोसरी केते स्पेंड करती ओके तो कौन फूड आउ रेंट रे बेसी खर्च करती हिज बजेट ऑन ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स इज नो डिफरेंट ओके नो डिफरेंस तेणु गोटे पर गोटे कंपेयर करके लिखि सारी देख ये सहजरे मुझे कहीदे मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम इन हाउस रेंट लिखिदेल तापर लिखिदेल मिस्टर पाठक also spend 20% of his salary in grocery and food items तेणु ये सबुठू अधिक खर्च हो तेणु तुम्हें लिखिदेल कंपेयर करके दे मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज 40% केते परसेंट 40% मिसेकरी ना कि 40% ऑफ हिज सैलरी इन हाउस रेंट एंड ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स ओके ही लिखिदेव बर्तमान ही स्पेंड्स 10% ऑफ हिज सैलरी इन एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन okay so he has allocated 10%
of his salary for the education of children and he is giving importance to education एमती लिखिदेव मनरू ओके एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ही स्पेंड्स 15% in medical expenses okay medical expenses for any problem for the body and medical checkup and all तुम लिखि परिबो तापरे he spends 10% of his salary in conveyance and transportation and सब खर्च गुडा लिखि सारिबो he spends 10% in establishment but he saves 15% he knows he is a very wise man he is an wise man तुम लिखि परिबो he is a wise man and that's why he wanted to save the money माने जत्ते बने कि लिखि परिबो पिला माने 15% he saves in bank and all so एमती लिखि देबो एमती लिखि देला परे ओके लिखि सारा पर दिस फैक्ट्स गोटे कनक्लूड कर दे पारिबो देख केमती कनक्लूड करछि दिस फैक्ट्स रिवील माने एटा कुहे जे बट दिस फैक्ट्स शोज बोल लिखि पारिबो शोज मिस्टर पाठक्स दिस फैक्ट्स अच्छे शो दिस फैक्ट्स शो किंबा दिस फैक्ट्स शो मिस्टर पाठक सेंस ऑफ रेशनैलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी जुडिशियस प्लानिंग इन दिस in his motto okay एते येटा न लिखि के तमे बारी माने लिखि परिबो जे मिस्टर पाठक is planning very nicely he plans his salary in nice manner and he saves 15% of his monthly salary he saves for the future एतिक लिखि देबो हे जिवो तापर देखिबा आ गोटे पाई चार्ट द पाई चार्ट बिलो shows the annual source of saving annual source of saving माने सेविंग केवल सेविंग एनुअल सोर्स ऑफ कोटी कोटी सेव करछंती मिस्टर दास कोटी कोटी सेव करछंती राइट ए पैराग्राफ इंटरप्रेटिंग द डाटा कोटी कोटी सेव करछंती माने सेविंग एनुअल माने वर्षकर सेविंग कोन कोन करछंती देखो पिला माने से पब्लिक प्रोविडेंट फंड माने पीपीएफ बैंक रे रखंती आ 45% फिक्स डिपॉजिट करछंती बैंक रे 45% फिक्स डिपॉजिट 25% पीपीएफ आउ रिकरिंग डिपॉजिट माने आरडी करछन पोस्ट ऑफिस रे लाइफ इंश्योरेंस रे से खर्च को माने सेविंग करछंती म्यूचुअल फंड रे सेविंग करछंती माने इन्वेस्ट करछंती ओके इन्वेस्ट करछंती म्यूचुअल फंड रे ओके लाइफ इंश्योरेंस रे एगुडा सब सेविंग करछंती ओके एगुडा सब सेविंग करछंती तेनु तमे लिखि परिबो जे मिस्टर दास तो प्रथम कौन कही प्रथम कौन लिखिया पाई ओके एटा प्रथम तुमको लिखिए बोली कही द पाई चार्ट शोज बिलो लिखिबनी द पाई चार्ट शोज अबाउट द एनुअल सोर्सेस ऑफ सेविंग ऑफ मिस्टर दास एति फर्स्ट सेंटेंस लिखि परिबो एमतिया ओके तापरे गोटे पर गोटे लिखिदेव कि मिस्टर दास ओके मिस्टर दास कौन कौन ये कर आउट ऑफ द माने सेव कर तुम प्रथम लिखिदेल कौन देख मु बुझे दूची द 45% ओके 45% ही सेव्स 45% ऑफ हिज माने सेविंग वाज इन कौन फिक्स डिपॉजिट 45% ऑफ सेविंग 45% savings of Mr. Das is in fixed deposit in bank लिखि देलो fixed deposit in bank माने the main saving लिखि देलो main saving in his fixed deposit okay FD in bank okay next to fixed deposit तमे लिखि परिबो next to fixed deposit he saves 25% in public provident fund 25% in public provident fund and एटा मिसे देलो 25 आउट 45 केते गेला 4 2 6 7 माने तुमे तापर सेंटेंस लिखि परिबो ही सेव्स 70% ऑफ हिज माने 70% ऑफ मनी 70% ऑफ सेविंग लगा 70% ऑफ सेविंग इज इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड कोन पीडी माने एवरी फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक ओके तापर लिखि देलो जे ही सेव्स 15% ऑफ हिज सेविंग्स इज इन कौन आरडी इन पोस्ट ऑफिस लिखि चल तापर लिखि चल जे ही सेव्स 10% in life insurance okay and he invest it like invest 5% of his investment is in mutual fund okay MF mutual fund एतिक लिखि साल परे तमे कौन लिखिबो
ना गोटे कनक्लूजन भाया लिखिदेव देखिए ये कौन कनक्लूजन देछि द वे मिस्टर दास देखुछ द वे मिस्टर दास टर्न्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स द एनुअल सोर्स ऑफ सेविंग सेंड्स ए क्लियर एंड लाउड मेसेज टू ऑल ऑफ अस आम मान को गोटे मेसेज दिए तांको सेविंग को देखला बेले सेविंग नीड्स सिक्योरिटी एंड he was risk taking, he averse to risk taking. His 5% investment in mutual fund justifies this fact. तेणु he is not taking risk एमती लिखिदेव तुम भाषा he is not a risk taker. he is not a risk taker कहीं म्यूचुअल फंड रे लगेले माने रिस्क अच्छी तेणु म्यूचुअल फंड रे मात्र 5% से इन्वेस्ट कर अदर रे से इन्वेस्ट कर दैट टीच अस ए लॉट ओके लिखिदेल आ गोटे देखा आ गोटे पाई चार्ट देख द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द प्रिफरेंस ऑफ फूड बाय द यंग एंड ओल्ड पीपल ऑफ ओडिशा राइट ए पैराग्राफ ऑफ 70 वर्ड्स टू एक्सप्रेस द इनफॉरमेशन तेणु तुम फास्ट आरंभ करदेल द करेन्ट पाई चार्ट बा द प्रेजेंट पाई चार्ट एमती लिखिदेव द प्रेजेंट पाई चार्ट सोज पाई चार्ट लिख सोज द दीटा पाई चार्ट्स अच्छी तेणु पाई चार्ट्स अच्छी तेणु कह प्रेजेंट पाई चार्ट सो द ये बिलो लिखाई तुम प्रेजेंट लिख द प्रेजेंट पाई चार्ट्स सो द प्रिफरेंस ऑफ फूड बाय द यंग एंड ओल्ड पीपुल ऑफ ओडिशा ओल्ड और यंग पीपुल ऑफ ओडिशा केमिति फूड को से माने प्रेफरेंस दौरान फूड गुड़ाक ये देख 90% किए ओल्ड ये देख यंग पीपुल 40% सी 40% दौरान ये 33% दौरान ओके तेणु ए बी सी डी तले दिखाई ए बी सी डी देख ए माने हूँ भेजिटेबल ए माने हूँ भेजिटेबल बी माने हूँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सी माने हूँ मीट एंड फिश टी माने हूँ सीरियल्स एंड पल्सेस ओके ए रु आरंभ करवा आम ए रु एटा देखा एटा कौन ये 27% ये 19% ओके तेणु यंग पीपुल एटा को बेसी इंपोर्टेंस दौरान ना तुम कंपेयर केमती कर ओके तो तुम कौन लिख द एटा कौन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स तुम लिख यंग पीपल दे डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस in vegetable and fruit okay they don't give much importance in vegetable and fruits they eat 90% they eat their food 90% of their food belongs to from vegetable and fruit okay and 27% but whereas compare करके लिखियो whereas old people they consume 27% of the food from vegetables and fruit okay they 27% of their food the food of the old people are from vegetable and fruit okay तापर B को आसीबो B टारे देखियो एटा 27% ये 70% नहीं 17% बीटा it is 13% okay young people they eat 17% of milk and milk products okay तुम्हें माने लिखि परिबो the 17% of young people the food of young people is that is milk and milk products okay now whereas the old people take old people take 13% of their food as milk and milk products okay तापर meat and fish तुम लिख लो meat and fish कौन लिखो meat and fish देखो meat and fish होची C meat and fish 40% C meat and fish 40% okay so young people they prefer more to meat and fish तुम लिख परिबो young people they prefer more to meat and fish okay so 40% of their food belongs to but 40% of their food is meat and fish okay whereas the old people they for 33% तो old people they कौन करते old people they take 33% of the food as meat and fish okay then तुम लिखि परलो cereals and pulses कोटा cereal डीटा okay cereals and pulses माने डाली जातीय खाद्य के 24% खाती माने 27% तो young people they take okay they take cereals and pulses okay
24% of their food, okay, 24% of young people, the food of young people एमती लिखिपर 24% of the food of young people are कौन केते कौन cereals and pulses, whereas the 30 माने केते 27%. Okay, so old people they take more pulses and cereals. Okay, so that is 27% of their food. Okay, तो एमिति तेके कंपेयर कर दलो, कंपेयर कर साला परे तमे लिखिदेल जे the old people are very conscious about their food एमती लिखिदेल गोटे सेंटेंस. तापर देख पाई चार्ट बिलो shows the demand of people of your own town while purchasing vehicles. Write a paragraph interpreting the information contained in the chart. देखो पाई चार्ट shows लिखा है बिलोटा काट दबो. The pie chart, the present pie chart shows the demand of people of our town, demand of people of our town, my town while purchasing vehicles. Okay, demand of the people. तेणु डिमांड कौन सबुठारु अधिक डिमांड कौन अच्छे मोटरसाइकल अधिक डिमांड अच्छे नहीं कि मोटरसाइकल नहीं कि द पीपल दे डिमांड मोर motorcycles, they demand more motorcycles. Okay, 40% of their demand are motorcycles. 40% of their demand are motorcycle. किंतु तमे तापर देखला को next to motorcycle, scooter and scooty. Okay, they demand 25% of their vehicle in scooter and scooty. They demand scooter and scooty, that is 25%. Okay, एमती लिखि चलो ऑटो रिक्शा 10%, 20% एटा लिखि चलो टिके बनै सुनी के लिखि दलो जेमती कि एठी लिखाइ छि जे the figure 40% is a case in point. Most of them prefer माने the people most of them prefer motorcycle to scooter or scooty. Okay, compare करके लिखाइ छि motorcycle, most of them prefer motorcycle. आओ कौन besides they like to move fast and live comfortably. 25% of our city लिखाइ देखो of our city dwellers purchase, city dwellers माने जो माने city रे रहंती, city dwellers purchase scooter and scooty. Okay, it replaces their standard of living. एटके बुझी कि लिखि दबो. 20% of them choose to purchase car for the sake of both luxury and necessity. 20% कौन कार किणती, them choose to purchase car, purchase माने किणिबा कार for the sake of both luxury and necessity. तुमको जहाँ आसिला तुम लिखि चल. ओके, क्या को डरबार ना जे एते भलो सेंटेंस हवा दरकार ना. तुमको जहाँ आसूची ताको लिखि चल कौन खाली स्थान छाड़बनी पिला माने. तो डिमांड फॉर ऑटो रिक्शा इज लिमिटेड टू 10%. तो तुम्हें निज भाषा लिख पार बहुत बढ़िया से लिख पार कौन ना 10% पीपल 10% people demand auto rickshaw एमती लिखिपर. ओके, the people demand 10%. ओके, तो 10% of the people's demand is auto rickshaw एमती लिखिपर. तेणु यही भाव में तुम लिखि चलले तुम बहुत बढ़िया कर. तेणु तुम ये कंपेयर कर दे पार कि लास्ट गोटे लिखिपर the people of the city they demand the highest demand of the people of city as motorcycle. Okay, highest demand is motorcycle लिखिबो. Okay, and next to motorcycle is scooter and scooty. So total 75% demand of the people are motorcycles or scooty. Okay, so so maybe they are educated एमती लिखिपर मैंने टिके बनै चुने के लिख देव. they are educated, they have to go to their office regularly, so they prefer motorcycle and scooty. And most of the young people are more in the city, that's why they prefer motorcycle. एमती लिखिदेव जमीती लिखा दरकार. ओके, लिखा दरकार. मुझे आज बुझेली पाई चार्ट केमती 4टा पाई चार्ट मुझे बुझेदेली. तेणु यही भाव में तुम स्क्रीनशॉट उठेकि तुम निजे लिखिपर. जिते प्राक्टिस कर जिते लेखा प्राक्टिस कर सेते भल. एवं समय लेखा प्राक्टिस कले जिते लेखा एमती बुझीदेल भिडियोटी तापर स्क्रीनशॉट नहीं गल तापर सेटा को पाई चार्ट को देखिबो. एटा स्क्रीनशॉट नहीं गल पाई चार्ट को देखिए ताको बुझेबो. लिखिबो ट्राए कर लिखापी. ओके, आउ क्या देखेबो लिखिकी देखेबो जहाँफल कि करेक्शन हो. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जब वीडियोटी भल लगी समस्त को शेयर कर गोटे लाइक कर दिंतु. आ जदि नुआ कर देखुं निहाती
ये वीडियोटी को नुआ कर देखुन निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब करदे बेल आइकन जे ऑल करिया को भूलिबे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बंदे को जनानी।